हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष भारद्वाज। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर है इंग्लिश में, ओके, एंड दे वांट टू डू आइल्स। लेट्स सी कि वो आंसर्स कैसे करते हैं क्वेश्चन में, और हमें ये भी पता चलेगा कि आइडियाज की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर फुल नेम? My name is Mukesh Kumar. एंड व्हाट इज योर फुल नेम? My name is Armandeep Singh. My name is Rohit Sharma. My name is Rohit Mehra. ओके, रोहित आपसे स्टार्ट करते हैं। रोहित, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Fagwada. रोहित, डू यू लिव इन a house or an apartment? I live in house. Okay. Arman, what do you do? I'm studying in plus 2 from DDR Devani Public School, Fagwada. Okay. Where are you from? I am from Himachal Pradesh, Dharamshala. Okay. Give it to Rohit. Okay, Rohit, describe your hometown. My hometown name is Fagwada. Street foods Okay. and market for first copy, shoes and clothes. Okay. Now try to answer in Punjabi. Question. Rohit Mehra. ਮੇਰੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਹੈ। Okay. Okay, Rohit. Okay, Rohit Sharma, describe your hometown. My hometown name is Fagwada. It is famous for market and street foods. It is have many parks with lot of trees and plants for better life for us. Okay, now explain in Punjabi also. पंजाबी नहीं आती? नहीं आती आती बोलो बोलो। ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਚੀਪ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂਗੋ ਟ੍ਰੀਸ। ਬਸ ओके, सो इफ नोटिस करिए कि पंजाबी आंसर लंबा से इंग्लिश आंसर बहुत छोटा सी। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਅਰਮਾਨ, ਨਾਓ ਯੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ। I live in Fagwada, so my hometown is Fagwada. It's a very big city. It has many places to explain. It has very good for Hinduism and Sikhism, because it has lots of temples and gurdwaras. It has many parks. It has also good for singing career, because it has many music studios in it. And yeah, bas. ओके, उन्होंने एक्सप्लेन बोला, एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लोर बोलना चाहिए, ठीक है? मैनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर। नाउ मिस्टर मुकेश, डिस्क्राइब योर होम टाउन। Basically, I am from Dharamshala. It is famous for it is a tourist place. It is a hill station. Many tourists are coming there for a picnic and for explore the mountain view and others view. It is a very beautiful place. In Dharamshala, the cricket stadium is also famous. Many matches are played there, like IPLs and etc. ओके, ठीक है। गिव इट माइक टू रोहित मेहरा। ओके रोहित, व्हाट डू यू डू? डू यू स्टडी? Yes, I am doing +1 from Shri Mahavir Jain Model School. What do you do? I am studying in +2 from Jain Model in arts. Stream. Arts. What do you do? I am studying in plus 2 standard. Stream is commerce,
and I am doing my +2 from GDR Debani Public School, Fagwada. Okay, so what you do? I am a mechanical engineer. I am working with CUECARDS and Fagwada as a design engineer. Okay. Okay, Mr. Rohit, why you want to go abroad? My dream is I am going to abroad and settle in Canada and open an electronic shop. Why only in Canada? Why Canada? Canada ही क्यों जाना है? बहुत देश है. पंजाबी दस. Why you want to go? Canada ही क्यों जाना? ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਆਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. पीआर छेती हो जाएगी. शाबाश. पक्के जल्दी हो जाएंगे. Okay, Rohit, Yes, sir. why you want to go abroad? Because I went to drive a truck in Canada. I want to I drive. want to drive a truck in Canada ट्रक ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜਾ. Why ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ? because there are because ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ. ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਰੱਕ ਆ ਤੇ ਰੋਡਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ. Okay, ਠੀਕ ਆ. Why you want to go abroad? I want to go abroad for my further studies because it suits me. Because I like editing. There are many editing courses available in Canada. So, Okay. Why you want to go abroad? In now, I have no plan to go abroad because I have no much more experience for abroad and no much more knowledge about the abroad. Okay. So कि मैं बाहर नहीं जाना. I just want to improve English. Okay. ठीक है रोहित. Okay, Rohit. Now answer. What are your hobbies? My hobbies are playing games and watching videos on YouTube. What are your hobbies? Playing outdoor games like cricket, volleyball, etc. Okay. तो ये सो. my hobbies is photography and video editing. तो दो हो गए. My four hobbies are. My hobbies are drawings and reading books. Okay. ठीक है. Okay, Mr. रोहित हम थोड़े आप क्वेश्चंस डिफिकल्ट कराएंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से ताकि थोड़ा सा आप बोलना स्टार्ट करिए. Okay, Mr. रोहित, what skills are important to become a successful businessman? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਥੀ इंग्लिश नहीं बोलना. ਨਹੀਂ चल पंजाबी दस. बोल रोहित पंजाबी से बोल. आइडिया नहीं आ रहा फिर मतलब गल प्रॉब्लम फिर इंग्लिश की नहीं है. फिर प्रॉब्लम आइडिया की है. चलो दूजे रोहित ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਸ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ. ਓਕੇ. ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਰਮਾਨ. क्वेश्चन बोलिए दोबारा. What skills are required to start a successful business, to run a successful business? Now many skills are available to get a businessman. Okay. It's like you have to improve your marketing strategies and providing customer and advertisement. ठीक है. हाँ जी मिस्टर मुकेश. To become a good businessman, we have
we have many skills like good team leader, positive mindset, and good. We have a good knowledge of sales and marketing ओके and sales. ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿੰਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ 1 to 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ क्यू का टाइप ठीक है रोहित तेरा क्यू कार्ड हैगा फेवरेट मूवी स्टार्ट कर दे सोचना नहीं कुछ स्टार्ट कर किन्ने बोल स्टार्ट शाबाश English बोल इंग्लिश ही बोलनी है ना अपन My favorite movie is Jal Mera Porta because it is a comedy movie. It has many comedy artists like Amrinder Gill and Pakistani actors. पंजाबी ट्राई कर मेरी पसंदीदा मूवी है चल मेरा पुੱਤ ਇਹ ਇੱਕ ਫਨੀ ਮੂਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ बस आइडिया का थोड़ा इशू है ना पंजाबी च आइडियाज नहीं आ रहे मतलब चल भी रोहित तू सुना शर्मा हाँ जी फेवरेट मूवी My favorite movie are Three Idiots. आर नहीं इज My favorite movie is Three Idiots. It is story based on friendship and students for struggling in its study and it is from my favorite actor Amir Khan and ठीक है पंजाबी ट्राई कर कोई पंजाबी च मेरी फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स क्योंकि ये मेरा फेवरेट एक्टर है सिर्फ आइडियाज ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ मतलब तो मेन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश ਦੀ प्रॉब्लम तो हैगी है बट एक और मेजर प्रॉब्लम की है आइडिया सो आइडियाज़ ਤੇ ਵੀ वर्क करना बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ सेम एटलीस्ट ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਅਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ My favorite movies are KGF and KGF Chapter 2. It's based on a real life moment. It's very good movie. It's the hero name Rocky High. It's a very good South Indian actor. ही इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग He's a very good Indian actor, South Indian actor, and its villain name is Atira. He's done by Sanjay Dutt. It's a very good movie. इट इज़ अ वेरी गुड मूवी It is a very good movie because when I see in the cinema of this movie, many people are shouting on it, and it's not to break on any movement. And then after interval, the suspense are totally changed. सस्पेंस इज Suspense is totally changed because the hero is died. द हीरो डाइड Hero is died, and then I wait for part 3. ओके कोई गल नहीं चलो मिस्टर मुकेश I love to watch movies. I watched many movies like action movie and funny movies. Here I would like to talk about an action movie named is Pushpa. It is a action movie. He recommended by my big brother who lives in Canada, and he came to India after 4 years. And he recommended this movie because he know about my taste about the movies. He know I watched action movie and funny movies, and Pushpa is the action movie. Then they recommended me to watch this movie. ही रिकमेंडेड मी He recommended me to watch this movie.
last Sunday we both are going to the cinema and watch the Pushpa movie, and it is a very good movie. And in this movie, Allu Arjun play the lead role. In this movie, he smuggled the wood, and we both are enjoy this movie, and I am shocked while watching the movie because my favorite singer Diljit Dosanjh also watched this movie, and after the movie I meet with Diljit Dosanjh and took selfie with him, Okay. and after that we done the home. ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 10 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਐਂਡ ਵਾਚ ਥੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਇੰਗਲਿਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।